quadratic equation it is. Quadratic equations. So hello there, welcome to the new session of equation series, in which we are going to now study quadratic equation, which is the second part, or you can say the second branch of the equations chapter. First branch was linear, second branch is quadratic, and third is our cubic. So now we are going to start with the quadratic equations. What is quadratic equations? Well, what are linear equations? What is linear equation? Equation having a degree 1, equation in which variable has a degree 1, such kind of equations are known as linear equations. But now if I am going to ask you, well, what about, just tell me, what about, let's say f of x. F of x is my function, okay, consisting x terms, variables in form of x. Is x square minus 5x plus 6. Now the very first question comes into our mind is that it is not the equation which we have studied earlier. अपन ने जो पहले पढ़ा वो यहाँ पे नहीं है, because whatever we studied up to this part only. Now our part has been extended by this portion, this x square portion, and now the situation in which you have x square, or the degree, highest degree of a variable is 2, in which the situation in which you have come, in such case the highest degree of the variable is 2. Such kind of equations are known as quadratic equations. Very simple enough. Equation with highest degree as 2 is known as quadratic equation. I would use pink better रहेगा यहाँ पे इसमें, क्योंकि वो रेड दिखता भी है अच्छे से. So that is what quadratic equation is. Now if I say that कि linear equation था मेरा, f of x ले लो, then in such case how many and it is equal to, let's say, 3. What are the roots of x? No, there are no roots. Only one root. And that root is, what that root should be? Minus 2. X should be equal to minus 2 so that I can get equal to 3. Only one root. But because क्योंकि यहाँ पे x was having the highest degree as 1, और ये इसलिए भी हुआ था because if we approach graphically, what I get is x equal to minus 2, and minus 2 is somewhat here. So let's take this line in which on this axis on this entire axis, let me just take the lighter color. On this entire axis our y is always equal to 0, and y is nothing but our f of x ना. अपन लिखते ही ऐसा ना कि let f of x equal to x plus 5 equal to 3. f of x is nothing but a function which represents that the following equation will be in terms of x only, and ये जो होता है ये मेरा y axis होता है, ये मेरा x axis होता है. y is always referred as f of x only. So if it is known as f of x, this line over here is known as f of x, or it is known as y, it doesn't matter, because they are always equal to each other. So it is okay for me to consider it as y equal to x plus 5 which is equal to 3. y is equal to x plus y which is equal to 3. मैं मतलब क्या कर दिया मैंने, लेबलिंग दे दिया यहाँ पे. And for x equal to minus 2 y will be 0. For x equal to minus 2 y will be 0, because if I solve it you can see that over here y is equal to x plus 5 minus 3 equal to 0. So x plus 2 is equal to 0. So I need to find out the value of x such that y is equal to 0. And what value x will hold is nothing but minus 2, because when I add 2 with negative 2 I will get 0. And whenever y is equal to 0, it means that we are strictly talking about x axis. Let me just redraw it, वहाँ पे बहुत ये हो गया है, minus 2. So at this moment the graph will be in this way, and having the coordinate minus 2 comma 0. See, f of x, or you can rather say y, and this is x.
So x comma f of x or x comma y, whatever it is, you get the root of the equation graphically, and graphically you say that it has only one root because it is a single line, it is a single straight line, it is a straight line. इसलिए now when it comes to the quadratic equation, how many roots do you expect from it? It's simple. The root corresponds to the number of degree, highest degree of the variable. Root corresponds to the, it's not visible, okay, I'll use the green. The root corresponds to the highest degree of the variable. So now if I say that x plus 5 equal to 3, then root is 1 because the highest degree is 1. If I say x square minus 5x plus 6, it means that x will hold two roots in such a way that two roots as in two values which when substituted with x will give you answer equal to 0. And such kind of equations where the variable's highest degree is 2, such kind of equations are known as quadratic equations. And the standard form is ax square plus bx plus c equal to 0, such that a is not equal to 0 and b is also not equal to 0. But it can be possible, it might be possible that b is 0, it doesn't matter. But the strictly condition, very very important condition is that a should not be 0. If a becomes 0, then अपना जो काम है यहाँ पे जिसका अपने को a ये x square का जो अपने को रूट निकालना है x का, वही वैनिश हो जाएगा. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं अगर a 0 हो गया तो. सो अपना मेन उद्देश्य यहाँ पे ये है कि a should not be 0, and in such case if I have x स्क्वायर की टर्म, तो वो इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा? वो इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? 2 रूट्स होते हैं. 2 रूट, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम भी नहीं होंगे. एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 2. एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 2. 1 तो रूट रहेगा ही रहेगा क्योंकि इट इज हैविंग द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री एज 2. इसका मतलब उसमें 1 डिग्री का भी वेरिएबल आ गया है यहाँ पे. ओके, एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट. मैं तुमको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि यहाँ पे अभी तुम्हारा देखो, मैं इसको रीराइट कर रहा हूं. वो कंडीशन हटा दिया मैंने, कंडीशन हटा दिया. इसका ये मतलब नहीं है कि कंडीशन है ही नहीं वहां पे. ओके, कंडीशन है ax स्क्वायर प्लस bx टू द पावर 1 प्लस cx टू द पावर 0. सी मतलब ये और ये, देयर इज नो चेंज इन दिस टू. द वन विच इज रिटन इन ग्रीन एंड द वन विच इज रिटन इन रेड, इन दोनों में कोई फर्क नहीं. ओके, इक्वल टू 0 लिखना भूल गया सर, वो फर्क आ गया. ठीक है, ले लो, लिख लिया. नाउ मेरे को क्या तुमको बताना है पता है क्या? ए इक्वेशन इन विच, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है, सच सिस्टम्स और सच एक्सप्रेशन आर नोन एज पॉलिनोमियल. ये तुमने स्कूल में भी पढ़ा रहेगा मोस्ट प्रोबेबली. पॉलिनोमियल एक वो चीज है जिसमें एक एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन इज इन सच अ वे दैट कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल गेट्स ऑन रिड्यूसिंग इन सच अ वे दैट इट विल एंड अप वेयर द डिग्री इज 0. एज इन अगर मैं तुमको बोलूं तो a x टू द पावर n है, तो b x टू द पावर n माइनस 1 होगा प्लस c x टू द पावर n माइनस 2 होगा. इट विल कंटिन्यू until unless let's take z x to the power 0. Such kind of expression is known as polynomial. और ये polynomial से ही इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रा इक्वेशन, क्वाड्रा नहीं बोलेंगे उसको एक्चुअली, 4th पावर का, 5th पावर का, 6th पावर का, वॉट एवर इट इज. अगर मैं तुमको बोलता हूं कि 5th पावर का इक्वेशन बताओ, so x to the power 5 plus bx to the power 4 plus cx to the power 3 plus dx to the power 2 plus ex to the power 1 plus fx to the power 0. It will end up over here. Now it can be possible that except a, b, c, d, e, f can be 0. Except a, b, c, d, e, f can be 0. All or some of them depends. But a cannot be 0. नहीं तो वो फिर 5th पावर का इक्वेशन बनेगा ही नहीं. खैर, अपना 5th पावर पे जाने का नहीं, मेरे को तुमको सिर्फ पॉलिनोमियल क्या है वो समझाना था. और पॉलिनोमियल पे से भी when n is equal to 2, what I get is nothing but this. For n is equal to 2, I get equation of quadratic form.
मैं यहाँ पे आप n में 2 रिप्लेस कर दो तो ये n माइनस 1 मेरा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे अब आगे जाने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन सी दैट द ओनली 3 टर्म्स एग्जिस्ट, दैट इज ax square plus bx plus cx to the power 0. सो सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जिसमें डिक्रीजिंग वैल्यू है वेरिएबल के पावर ही, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर नोन एज पॉलिनोमियल. एंड नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं एंड अब कैसे कैलकुलेट करना है, सॉल्व कैसे करना है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन लेटर सेशन. बट यहाँ का सेशन इतना था कि व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस, और आई वुड रादर से अ पॉलिनोमियल इन विच n is equal to 2 is nothing but the quadratic equation. Or quadratic equation is that equation in which the highest degree of the variable is 2, not more than 2. Such kind of equations are known as quadratic equation, and those equations have roots 2, not more than 2. So yes, that's it for today's session, guys. In further session we will discuss more about quadratic equation. That's it from me. Thank you.